Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Hope you're all doing well. होली मजे से चल रही है. Good evening, Samat. A very good evening, Imran. We'll start in 2 minutes, guys. Good evening, Nilesh. You guys didn't go to play Holi? Hey, good evening, Aviral. Good evening, Ans. We'll start in 2 minutes, guys. Keep the charts clean. We'll start the daily analysis screening perspective in 2 minutes. No. Hit the like button. Sir, one fact, my father's work is of holy colors. Nice. आप ही हो पूरी देश को रंग बरसाते हो. Nice. 'टारगेट हिट हो चुका है और कितना टारगेट चाहिए आप लोगों को? रुको थोड़ा. इवनिंग सेशन का नेक्स्ट लोकेशन देखेंगे. Our TP1 was 82,756 and 83,212. दोनों हिट हो गया. We'll allocate the next plan of action with the next 2 minutes. कितने में क्लोज किया इमरान कल की ट्रेड? Kinda. Tota Colors is manufactured in Hathras only all over India. Papa sees the marketing of all Maharashtra. Great. 2,300 points. Great man, great. मैथमेटिकल नंबर के पास क्यों नहीं निकले तुम? कोई नहीं. Even that is a good number. Let's start with the screening, guys. ये टारगेट हिट हो गया है. We'll allocate the next targets. Starting with the wave of the daily time frame. In the wave of the daily time frame, what is the first thing that you will be looking for marking over here? हम मार्क करते हैं जो प्रीवियस पीओआई रेंज है. पीओआई प्रीवियस पीओआई रेंज से हमने जो अलोकेशन लिया है उस अलोकेशन पॉइंट को with the inducement point of action we will draw it out over here. And what do we see the moment of action? We got a retracement over here and the buyer's allocation point at this point of action. Right? Post this point of action, what is the next thing that we noticed? There was a break. This was a mathematical concept. Closure हुई है. एक ही सिनेरियो आज के दिन में आपको नोटिस करना जारी कर रही. आज के दिन आपको एक ही चीज नोटिस करना है. अगर मार्केट रेड कैंडल के ऊपर ब्रेक होता है
तो ये हमारा जो बुलिश सिनेरियो है ये कवर करके मूवमेंट अलोकेशन देगी। उसके लिए हमें एक स्मॉल प्लान ऑफ एक्शन देखेंगे। दैट प्लान ऑफ एक्शन विल बी अलोकेटेड इन द मूवमेंट ऑफ 4 hours, right? Where is our major internal liquidity point? The major internal liquidity point is at 95,006. With that plan of action, each demand was completed at the point of action. So this is our major demand one, which was in the daily time frame. From this point of action, the movement got concluded and target was hit at the range of point, right? Post the closure, what is the next point of actions that we'll be looking over here? The next point of actions we'll be looking in 4 hours. How does the market look in 4 hours, right? Previous demand ये हमारा था. With this demand of allocation, we will move to the next point, which was at this retracement point, right? Retracement point के साथ movement आई थी यहाँ पे. With that, market had given a continuous move. So what we will do? So we will be allocating the double the demand over here. With this demand point of action, हम इसे multiply करेंगे by 2 and target will be of 150% over here. So 150% से मार्केट ने रिजेक्शन लिया. जैसे ही मार्केट ने रिजेक्शन लिया, व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन? जो हमारा प्रीवियस रेड कैंडल ऑफ अलोकेशन यहाँ पे दिख रही थी, उसी अलोकेशन के साथ मार्केट ने एक ड्रॉप अलोकेट किया. विद दैट ड्रॉप ऑफ अलोकेशन इंड्यूसमेंट बिल्ड हुई. प्रीवियस जो डिमांड था इंड्यूसमेंट के साथ मूवमेंट अलोकेशन में आया. पोस्ट क्लोजर जितना मार्केट ने रिट्रेस लिया, जितना हमारा फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन में यहाँ पे बिल्ड हुई थी, उतना ही मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेस करके मार्केट कंटिन्यूड द मूवमेंट. कितना मार्केट ने मूवमेंट कंटिन्यू किया? जितना हमारा प्रीवियस डिमांड था उतने में ही प्लान ऑफ एक्शन बिल्ड करके कंप्लीट की थी, right? So at this point of action, what is the one thing that you guys have to be working over? The next one thing that you guys will be working over is on to the movement of the mathematical numbers, right? Post the closure of this, market ने 11th के दिन एक बड़ा सा विक क्रिएट करके मार्केट ऊपर के लिए जा प्राइस एक्शन बिल्ड किया. What was the 2 point of actions that market worked on? Let's do the math over here. Okay, so this is our swing low, this is our swing high, this is our retracement point, right? With this point of actions, what are the next things that we'll be allocating in for us? We'll allocate the mathematical concept 2.0. The swing high is at 82,200.84. Swing low is at 76,621.95 and swing retracement point is at 79,139.59. Right? What is the formulative number that we have got? The formulative number that we have got is of 88,166.23 and the intermediate ratio is of 90,297. Let's mark out that levels. Right? With that plan of action, what is the next step that we'll be working on? The next step will be working on allocating the movements of the supply. In this scenario, this was our first supply of allocation. With this first supply of allocation, we will mark out our second post, the retracement point. Then we will come down to the retracement point of the third. Then we will allocate the movement towards the consideration. Right? इसके साथ mathematical numbers जो है हम allocate करके चलेंगे. That is एक second ना. The mathematical numbers that we'll be allocating and moving on is 88,166.23 has first point of action, which is this one. With this point of action, we'll be marking the second, which will be looked into the same circumstances of 90,297.37. So these are the two numbers of 4 hours what we'll be working on at the current stage.
What is the next step marking we'll be looking at? The next step marking we'll be looking at is in 1 hour. I'm just removing the retracements point so that it's easier. Okay, अभी इस point of action में what is the movements that we'll be looking here? For the nice, easy and directed version, we'll be looking for an allocation towards the long in perspective of the movements according to the previous drop of scenario 2, right? With the scenario 2, what does the market have done in here? Part 1 of action. With this part 1 of action, market has doubled the supply. With the rejection point, it has covered up the ratio. With the coverance of the ratio, again the market has moved. Continuity में market जा रही है. So what is the next plan of action that we'll be looking for? We will allocate the plan of action over here. With this plan of action, 50% will be the markup range. Okay. So with this plan of action, what is the one thing that we'll be working over here at the current stage? At the current stage, we'll be working over here on the circumstances of the moments which will be looked into the mathematical numbers. This will be working as a swing low, this will be working as a swing high, this will be working as a retracement point, right? Let's look into the numbers of 1 hour and how does it works. Swing high is at 81,501.96. Swing low is of 79,979.25. The retracement point is of 81,066.26. Okay, so what are the formulative numbers that we are getting over here at the current scenario? The formulative numbers that we are getting over here is as per the movement plan of actions of golden ratio 83,530 जो कि target hit हो चुकी है. And what is the second plan of action that we'll be allocating over here? That is 84,111.68. This will be our intermediate ratio for the current state. Okay. So just now BTC में वो टारगेट कंप्लीट हुआ, उस टारगेट के साथ नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन हमें यहाँ पे दिखने को मिलेगी, right? So these are the scenarios of 1 hour. Allocating points has been marked, direction has been marked. What is the next thing that we'll be looking at? 30 minutes. What does 30 minutes plan of action will be working all put together through? The plan of actions will be looked under the circumstances of the POI range and the allocations of inducements. In this plan of actions, what are the next major two things that we are looking? Allocation यहाँ तक ठीक था. इस point of action से market we can draw out the second level of confirmation. Action number 1, action number 2. Currently, this will be the action number 3. As per the targets, the market is giving the right value of communications and retracement market ने कितना लिया है, जितना हमारा previous moment of action है उतना ही, right? So इस point of action के साथ BTC में एक plan of action till the mathematical numbers allocations देखेंगे, उसके बाद ही next plan of actions will be looked into. Okay, so these are the current plan of actions which will be working in BTC at the current stage. Plan action number 1 is marked, plan action number 2 is marked, plan action number 3 is marked. So in this scenario, अगर 84,149 mark होती है, that's when we will change the mathematical number. Till then, no, the mathematical number remains the same. कोई doubts है आप लोगों को यहाँ पे?
Any doubts you guys are getting? If no doubts, we'll move to gold. BTC में कोई doubts, guys? This movement is continuous, so how do we identify the exhaustions? Execution or exhaustions? मैं नीलेश का मैसेज का वेट कर रहा हूँ, नहीं आया. Okay, exhaustions. Exhaustions will be identified through the ये inducement range only, ना बाबा. The reversal areas will be identified, or the moment of actions will be identified through the inducement range only, no? Right? So because it's Friday, it's going with one-sided direction, right? With this plan of action, what the market could do is, right? एक mathematical number के पास आने के बाद the trend will get weakened. Currently, ये strong trend नहीं है जो ऊपर जा रहा है. This is a weak trend. Okay? आज के दिन में जो movement allocate हुई है ना, यूटीसी का टाइम पे जो ये मूवमेंट ऑफ अलोकेशन हुई है ना, ये पूरा वीक ट्रेंड है. दिस इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, दिस इज स्टिल इन एक्शन. सेम विद गोल्ड. ओके, गॉट इट. देयर इज लॉट ऑफ डिले इन चैट. सेम सिनेरियो विद गोल्ड. क्या बोला था? ये लिक्विडिटी लेने तक मैं लॉन्ग की तरफ इंटरेस्टेड नहीं हूँ. कीपिंग इन माइंड यहाँ से थोड़े लोग लॉन्ग के लिए भी लिए, राइट? बट the actual movement over here wasn't completed. Market will tend to complete it. वो अभी कर रहा है. Post completion only will be working on that next move. Gold में.
Let's start with gold, guys. Okay. Major buyers allocation point. With the major buyers allocation point, ये हमारा previous demand allocation था. Previous demand allocation के साथ एक retracement यहाँ पे generate होते हुए दिखी थी. That retracement was as per the previous inducement range. With that inducement, market took as much as the requirements of that point of action. उस point of action से demand completion. Continuity में break दिया था, so we will allocate the second round of demand with that point of action. What do we notice? Market took a rejection from 150%, right? आज के दिन में market bullish ही है. In this bullish scenario, what is the next plan of action? Right? Doubling the quantity. What is the next 150% marking? Okay, so this is the 150% marking. मुझे लगता है कि सर को मेरे वाला मैसेज नहीं दिख रहे हैं. भाई आपका दो ही मैसेज आया है, एक है सर, एक है मुझे लगता है कि सर को मेरे वाला मैसेज नहीं दिख रहा है. ओके, ये दो ही मैसेज आया मेरे को सच में. ओके, so daily time frame हुआ. Let's come down to 4 hours. What are the 4 hours major allocation points that we'll be looking at? The major allocation points that we'll be looking at the supplies at the current state of action. Mark out the supplies. With the supplies, the continuity of the movement. Post the continuity of the movement, what is the next plan of action? Exact POI range completion. With the POI range completion, market took a demand range of inducement generation. With that plan of action, market completed the move in 3 rounds of demand. Round 1 of the demand, post that round 2 of the demand, the market closure. With the market closure point, the next plan of action we'll be looking at is allocating the reversal point of action. So यहाँ पे बुलिश सिनेरियो S2 में बुलिश 2 क्रिएट हुई थी, उसके साथ मार्केट ऊपर के लिए बिल्ड हुआ था एंड मार्केट इज इन द ट्रेंड रेंज. अभी व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शंस दैट विल बी लुकिंग एट? विल मार्क द प्रीवियस सप्लाई. With the previous supply we will look in for the retracement point. With the retracement point closure, then we will allocate the next round of movements through the retracement point. इस scenario में what do we have to do? Market has taken break, continued. We will allocate the next round of supply. With the next round of supply, we'll mark the 50%. So where is market tend to take the rejection from? From the 50% range. Okay, so at this point of action, what are the next scenarios that we'll be working on? We'll be working on the mathematical concepts. नहीं, इससे पहले भी किया था, लगता है इशू है कुछ. मैंने दूसरे आईडी से किया था, दूसरे आईडी से कुछ मैसेज आया नहीं है रचित. आफ्टर गुड इवनिंग अविरल का मैसेज है, इमरान का मैसेज है, समर्थ, नीलेश और तुम्हारा. ओके, सो लेट्स अलोकेट द मूवमेंट प्लान ऑफ एक्शन. रिवर्सल पॉइंट ऑफ एक्शन ये कंप्लीट हो चुकी है. नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन, this will be our swing high, this will be our swing low, this will be our same retracement point of action, wherein in this scenario what are the steps that we'll be looking at? Swing high has 2941.446, 2880.324, retracement point as 2931.031, formulative number आके 61.122, golden ratio आके 3029.9, intermediate ratio आके 3053.27. Let's mark out that levels. At the current range, this is our plan of action. नहीं क्या है मैसेज बता दो, प्रॉब्लम नहीं है.
I can read it even now. 3029.926 is the first one. Next, we'll mark out the second one. The second one is at 53. 53.275. गोल्ड में कब आएगा क्या मैम? Okay, this is the 4 hours levels that we'll be next allocating. What is the next plan of action after 4 hours? Will come down to 1 hour. In 1 hour, market is taking the rejection from the point of interest where we were looking at. Here we can look in 1 hour, we do have a scenario of S1 bullish, market closure, continuity close. अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज होती है, नेक्स्ट कैंडल रिजेक्शन लेके नीचे के लिए आती है, market will continue the trend. Okay, so उस point of action we will be looking in the point of action of the bearish movements. अगर ये 13 minutes का कैंडल क्लोज होती है, उसके साथ नीचे के लिए we will look for 150 pips. So this is the market current conditions. What are the next plan of actions that we'll be working on? Right, the next current plan that we'll be working on, the golds are allocating the levels through the major circumstances of 1 hour POI range and the inducement zones. Inducement zone का पे है scenario 1 S1 का at this point of action. This will be looked as the range of correction. Correction के साथ movement ऊपर के लिए build हुई थी. इस point of action के साथ we will allocate the next. Okay. So इस सिनेरियो में हमने कौन सा लेवल्स मार्क किया था? We had marked two levels majorly. इस point of action से इस point of action, then this, then the continuity. Right, at the current stage, what is the major rejection points that we'll be looking at? 2906 will be our low. Sorry, 2906.332 will be the swing low. 2947 will be the swing high. Retracement point will be at 2933. Right, let's look into the numbers. 2947.485 minus 2906.332. What is the formulative number that you are getting? 41.153. What is the retracement point that we are allocating at? 2933.070. What is the numbers that we are getting? The numbers that we are getting is 3000 and 3015. 3000 number hit हो चुकी है. This is the 3000. With 3000, the next plan of actions that we'll be looking at the intermediate ratio. Right? How do we allocate that number over here at the current stage? With the same plan of action of the intermediate, which is 3015.376. भाई हॉरिजॉन्टल के लिए मैं नहीं मार्क कर रहा हूँ, आप लोग पूछ रहे हो हॉरिजॉन्टल रे, मैं मार्क कर रहा हूँ उतना ही. मेरे को कोई शौक नहीं है हॉरिजॉन्टल रे मार्क करने का. Okay, so these are the levels that we are getting in the current plan of action of 1 hour. Okay, so post this, what is the next plan of actions that will be working over here? हम आते हैं 15 minutes में. 15 minutes में what is the current scenario that we can look at? Do we have an inducement range built? Yes, we do have an inducement range built. Right? Partner 1, partner 2, partner 3, break. Continuity में आती है, then we will look for a next plan of action. Target कितना होगा? Let's do the mathematical numbers over here. At the current stage of action, the swing high remains the same, which is here. Swing low will be this. Retracement point will be 3000.
The numbers are 3004.784 minus 2986.451. Retracement point आके 3000. Formulative number is 18. Targets are 2970 and 2963. Okay. The conditions are only one thing, 1 hour का candle closure. उसके साथ रिट्रेस लेके कंटिन्यूटी में आना है तभी ही, उससे पहले नहीं. ओके गाइस, ऑल द न्यू मेंबर्स वेलकम टू द स्ट्रीम. जो भी डाउट है पूछ सकते हो. बीटीसी में था वो कुछ आइडेंटिफाई में प्रॉब्लम हो रहा था. पूछो कहाँ पे आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम हो रही थी. विल हेल्प यू आउट. किसी को भी गोल्ड में कुछ डाउट? इमरान क्लियर है गोल्ड का? मैं अब भी हटा दूंगा. हॉरिजॉन्टल रेस से मेरे को कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है. आप लोगों को चाहिए नंबर्स नंबर्स, उसके लिए लगा रहा हूँ मैं. क्लियर सर. ओके. Hit the like button guys. कोई भी डाउट है पूछ सकते हो. Where the numbers are coming from, how the numbers are coming from, how the movements are going through, how we are looking into the circumstances of execution, everything will be explained if you have doubts in it. Okay. In gold 1 hour volume kind of break. In 1 hour volume breakout. कौन से कैंडल पे आया? Closure चाहिए नीलेश. Post closure only we will be looking into the next circumstances, not prior to that. Okay. We need to have a closure. And what does the market do? When the market has created the high volume, with the high volume, which side of generation it's been showing? नीलेश किस तरफ का मूवमेंट अलोकेशन दिखा रहा है? बाई साइड का वहां पे अलोकेशन दिखाया है. तो what is the first thing the market will do? Market will directly move in the direction, or first it will hunt down? नीचे आके लिक्विडिटी लेके ऊपर जाएगा या डायरेक्टली मूवमेंट दे देगा? राइट नाउ अपसाइड. यस. सो अगर वॉल्यूम रेज हुआ है मतलब लिक्विडिटी हंट करेगा. लिक्विडिटी हंट करके उसके साथ प्लान ऑफ एक्शन मूवमेंट जनरेट करेगी. यस राइट समर्थ. हंट डाउन. विल ट्राई टू हंट फर्स्ट. या 1 hour 11th March 6:30 AM इसमें अपना MC2 कैंडल रिवर्सल एरिया एंड स्विंग हाई का एरिया कैसे आइडेंटिफाई करें?
6:30 AM इंडियन टाइमिंग है या यूटीसी है रचित? इंडियन टाइम, विल कम टू दैट। सर मार्क द लाइंस फॉर एंट्री एग्जिट्स विल बी फाइन। सर अभी चार्ट इतना गंदा लग रहा है सर। सर वेंकट, यू डोंट वांट टू लर्न और व्हाट? आप वो बताओ, यू डोंट वांट टू लर्न? कौन सा टाइम? 6:30? सेम है। अनडाउन मीन्स लिक्विडिटी लेगा अब इधर। ओके, सो 76 6:30 जो लेवल है ना रचित, रिवर्सल पॉइंट ऑफ एक्शन के लिए भी वही पॉइंट ऑफ एक्शन रहेगा, क्योंकि ऊपर से अगर मैथ्स करोगे ना, सो इन दैट मैथ नंबर यू विल गेट दिस एज अ रिवर्सल पॉइंट। Okay, with this reversal point, the next plan of action towards the long will be towards the movement over here, right? So your low will be the same, your swing high will be the same, your retracement point will be here at the starting. On the completion, your swing high will change, your retracement point will change here, right? If I mark, this is your swing low, right? This will be your swing high first point, swing low second point. This will be your second swing high. This will be your second swing low. Retracement, sorry, swing low remains the same. Retracement point and the swing high points will change. That's it. Hey, good evening, everyone. Hi, sir. What are the levels for BTC? These are the levels, Errol. At the current stage, market is taking the rejection from the same point of action where we want it, right? So if that market breaks at the current circumstances, with the creation of his do scenario, we'll be looking for the next plan of action. Okay. Sir, mark the line for entry and exits will be fine. Entry and exits यहाँ पे नहीं बताया जाता है, I said you that. नहीं, that's not a problem. I'm saying entry exit lines. I'm not going to mark that lines. Okay. वो निकाल दिया था MC2 के थ्रू, लेकिन वो जो स्मॉल जो रेड कैंडल है 11:30 वाली में कंफ्यूज हुई। वहां पर रिवर्सल एरिया मिल नहीं रहा था। रिवर्सल एरिया कहाँ पे मिलेगा? जब आप लेवल डालोगे, उस लेवल से जब रिजेक्शन लेगा तब मिलेगा ना। उससे पहले कैसे? गेट रेडी गाइस फॉर द हंट। नॉट इन जस्ट वन, दोनों में भी गेट रेडी फॉर द हंट।
यहाँ पे शॉर्ट के लिए प्लान ऑफ एक्शन बिल्ड नहीं है, यहाँ पे विल बी गोइंग एज पर द अलोकेशंस। अप ट्रेंड के लिए किया था, हाँ राइट। अप ट्रेंड के लिए वो जो सेम लेवल है ना, वही लेवल से अलोकेशन था, वो सही था। फर्स्ट वो जो छोटा रेड कैंडल है उस पे टारगेट हिट होने के बाद बड़ा स्विंग हाई एंड लो विद द रिट्रेसमेंट पॉइंट। ठीक है, नॉट प्रायर टू दैट। Threshold is for reversal indications, Baba. MC2 is for the movement identification, ना? कहाँ तक जाके market will tend to create a inducement, वो वाला उसमें है, right? वो indications will be identified through the MC2 concept. Threshold के through we will identify the reversal spot, that's it. BTC short में कैसे identify करें? Insider liquidity allocate करो. That's the only option that you guys have now. Okay, sir, got it. Insider liquidity at 82,500. No, that is the MTSL point of the trade. Insider liquidity is looked from the starting of the day till now, right? That is the plan of action. Sir, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया गोल्ड में। मार्केट लॉन्ग वाला एसएल लेने आ रही है, मींस उसके बाद लॉन्ग का ट्रेड देख रहे हैं ना। ऑल्सो जस्ट फॉर दैट यू सेड इफ नीचे ब्रेक करके कंटिन्यूटी करेगी तो वी विल लुक फॉर अ शॉर्ट। हम लॉन्ग के तरफ कब बोला? लॉन्ग के तरफ वॉल्यूम इंडिकेशन दिया है करके बोला मैंने 1 आवर में, राइट? उस समय पे क्लियर कट मैसेज देखना अविरल, नीलेश का मैसेज देखो। उसका मैसेज था वॉल्यूम ब्रेकआउट आया है, राइट? एट द करेंट सिनेरियो उस समय पे मार्केट बाइंग के तरफ दिखा रहा है करके बोला था वो। हमारा ट्रेड 2970 तक का है एट द करेंट स्टेज शॉर्ट, because major liquidity should be taken, so we want that liquidity. Okay, scenario is short at the moment. जब तक यहाँ पे इंड्यूसमेंट बिल्ड नहीं होगी वी आर नॉट लुकिंग फॉर लॉन्ग। क्लियर है? इनसाइडर लिक्विडिटी समर्थ वी विल लुक फ्रॉम द स्टार्टिंग डे, बिकॉज स्टार्टिंग डे से अब तक मार्केट एक्सेल रेंज में है। इफ यू आर नोटिसिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ एक्शन till this point of action market is in the एक्सेल move. When the market is in the excel move, what will market tend to do? Market will tend to hunt down the liquidity.
एसएल हंट में नहीं समझा, क्या मतलब है? रिटेलर्स का एसएल पर्सपेक्टिव लेना। मतलब जस्ट फॉर एन एग्जांपल समझ, यहाँ पे मूवमेंट चल रही है, ठीक है। सो यहाँ पे रेड कैंडल है, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, मूवमेंट, with this movement continuity, right? स्लो एंड स्टडीली मार्केट जा रही है, राइट? एक पॉइंट ऑफ एक्शन तक जाएगी। उस पॉइंट ऑफ एक्शन तक जाने के बाद वहां पे तुम्हें मेजर रेंज ऑफ कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे। मेजर रेंज ऑफ कॉन्टैक्ट्स मतलब हर एक रेड कैंडल के बाद रिटेलर्स का बाइंग दिखेगी आप, राइट? सो दिस इज अ रेंज कॉल्ड एज एक्सेल, where the market is played under a parallel channel zone, राइट? इस पॉइंट ऑफ एक्शन में हमें 1:10 रेशियो का रिस्क टू रिवॉर्ड चाहिए होता है। जैसे ही वो रिस्क टू रिवॉर्ड का रिस्क मैनेजमेंट एक्सेस फ्री होती है, market will take a break, then continue again in the same direction. Okay, सिनेरियो वाइज दिखाता हूँ। लास्ट 3 दिन से सेम किया है मार्केट में। आज फ्राइडे है, फ्राइडे पे मैं भरोसा नहीं करता हूँ, बट लेकिन इस पे भरोसा है मार्केट पे, राइट? सो अगर नोटिस कर रहे हो यहाँ पे अविरल क्या किया, मार्केट स्लो एंड स्टडीली नीचे आ रहा था, करेक्ट? एक पॉइंट ऑफ एक्शन में ऊपर जाके लिक्विडिटी हंट की, राइट? जैसे ही लिक्विडिटी हंट किया, मार्केट में सबको लॉन्ग की तरफ बिठाई, देन कंटिन्यू टुवर्ड्स द डाउन। सेम सिनेरियो यहाँ पे क्या था, इस पॉइंट ऑफ एक्शन एंटायर सिनेरियो वो, in this point of action entire scenario was of the excel, right? In this excel moment, what did market do? Market tend to hunt down everyone in a go. Notice the movement over here how it is, and movement over here how it is, right? So that is an excel moment, that is hunt down. Oh, got it. Sir, how many types of bullish engulfings are there? There are 8 types of bullish engulfing. अभी के लिए 4 सुन लो। एंगल्फिंग्स में 8 होती है। 1, 2, 3, 4th वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। बड़ा विक क्रिएट करता है, छोटा बॉडी रहता है, राइट? उसके बाद वाला जो मूवमेंट है, 4। ओके, सेम थिंग विद द बुलिश सिनेरियो। 4 more minutes guys, BTC। ओके सर, हर 3-4 कैंडल में एंट्री दिख रही थी। यस सर, गॉट इट। अगर आज के दिन में नोटिस कर रहे हो, हर एक कैंडल के बाद एंट्री थी, करेक्ट? सो इतना आसान नहीं होता है।
बड़ा मूव जब आता है। यहाँ पे स्लो एंड स्टडीली मार्केट मूव किया था। सर एक ईएमए स्ट्रैटेजी निकाल दो। आज के दिन जिन जिन लोगों को मैसेज करना है ना, प्लीज डायरेक्टली चैट पे कर दीजिए। मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप बंद कर रहा हूँ। सिर्फ आज के दिन के लिए। मंडे से फिर से ओपन हो जाए। और एक मैसेज आ गया है, पढ़ लेता हूँ। सर आपका एक कॉन्सेप्ट, सर ये आपका एक कॉन्सेप्ट। ओके सर, आपका ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए कौन सा वाला वीडियो फर्स्ट देखूं? I bumped into your channel and for matter of fact I know math says hi मार्केट से, सॉरी, आई नो मैथ से ही मार्केट को क्रैक किया जा सकता है, बट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू कैच योर लॉजिक। आई नीड द फर्स्ट पॉइंट टू थ्रू I need the first point to your thoughts so I can start understanding your concepts. Please help. You sound Karnatakan. I am from Udupi, Karnataka. Where are you from? I'm from India. सर आपका फर्स्ट वीडियो, होम टैब में जाइए, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स करके एक सेक्शन है, उसे देखिए। एमसी सेक्शन, एमसी सेक्शन होने के बाद लुक इनटू द लिक्विडिटी सेक्शन, लिक्विडिटी सेक्शन होने के बाद लुक इनटू द सप्लाई एंड डिमांड सेक्शन। लर्निंग पर्सपेक्टिव 3 sections है, you can look into that, you will understand why and how। ठीक है। That was the last message guys, उसके बाद मैं टेलीग्राम ओपन नहीं करने वाला हूँ। सिनेरियो 1 सिनेरियो 2 दोनों क्रिएटेड है बीटीसी में। बेरिश का बोल रहा हूँ। नॉट इंटरेस्टेड, solely not interested। Any learning, yes sir, learning video आ रहा है समर्थ, it's coming। Sunday 11 o'clock, 11:11 you will get the video। Where is Varun? पार्टी में, पूरा एलटीडी पार्टी में है अभी।
सर आपकी थर्ड बुक आने वाली थी इस मंथ, एडिटिंग में है, पब्लिकेशन हाउस में है, एडिटिंग में, जैसे ही होगा वो आएगा। एक्सपेक्टेड बाय द मंथ एंड ना। इतना बेसब्री से इंतजार हो उस बुक का। हाँ विरल। व्हाट आर योर बुक नेम्स? First book was The Crypto World, second book was The Unbreakable, the third book, which is launching, is all about the blueprint to wealth. The fourth book, which will be launching post the blueprint to wealth, will be Why Trading and How to Trade. सर पार्टी सुन के अच्छा लगता है। नाइस। नाइस वेंकट। इमरान शॉर्ट में हो क्या बीटीसी? कैन यू शेयर लिंक फॉर दैट? सब लोग छुट्टी पे पार्टी पे है, नॉट इवन वर्षा देयर, बट इफ यू वांट I can show you how to look into it. Amazon पे जाइए. You just put my name, you will get the book. Nothing more you have to do. Just put the name. No. NITESHPAWAR type कर देना. You will get the books. This is how it looks. Okay. Beautiful guys. What a rejection in the market, huh? अभी तो शुरू हुआ है rejection. Okay, Samarth. The Unbreakable, The Journey to Mindset, Discipline and Success, The Crypto World. The Hype, The Reality, What Lies Ahead. These are the two books. Third book is launching this month end. गोल्ड में मैं लॉन्ग में तब तक इंटरेस्टेड नहीं हूं जब तक एक्शल ब्रेक नहीं होता है। एक्शल ब्रेक होने दो, उसके बाद मैं इंटरेस्टेड हूं, उससे पहले आई एम नॉट। आई लेट इट गो टू द मार्केट। लो आप जिन जिन को पैसे बनाना है बनाओ। Confident risk free trades will be allocated post the एक्शल break of liquidity. Sir, I am dying to learn this trading. Then why are you not backtesting, Venkat? Say me that. Hit the like button, guys.
उससे पहले मैं लॉन्ग करने के लिए कोई भी इंटरेस्ट में नहीं हूँ। कर दो यार ब्रेक, मजा आ जाएगा। पूरा हंट डाउन दिखेगी मार्केट में, पूरा हंट डाउन। 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10। छोटा मोटा भूल जाओ। 1 2 3 4 5। सर आप पार्टी में नहीं गए? आई विल गो बाय 11 o'clock। 11 o'clock तक सेशंस है, उसके बाद। वो कहते हैं ना, पार्टी तब शुरू होती है जब हम एंट्री मारते हैं। That's the reason Varun messages are also not being seen. Yes, that's right. That's the only reason. पूरा एलटीडी सेम पार्टी में। अभी जाऊंगा तो कलर लगा देंगे, उसके लिए नहीं जा रहा हूँ। Sir, I can backtest only on MC, not candles. फॉरवर्ड टेस्टिंग किया तुमने वेंकट? डिड यू डू द फॉरवर्ड टेस्टिंग? नहीं, वरुण भी वही पार्टी में है। पूरा एलटीडी वही पार्टी में है। ऑलमोस्ट जितने लोग आते हैं ना एलटीडी में, वो सब उधर ही है, सेम पार्टी। किसी का भी मैसेज नहीं दिखेगा आज। एलटीडी मतलब वो एक सेशन चलती है यहाँ पे, यूट्यूब छोड़ के, राइट? उधर का। अगर फुल फॉर्म जानना चाहते हो तो लाइव मार्केट ट्रेड डिस्कशंस होता है। ओके सर, विल डू द फॉरवर्ड टेस्टिंग। वेंकट, मैं आपको 3 वीक से बोल रहा था फॉरवर्ड टेस्टिंग करो, आप अब जाके ओके बोल रहे हो। डज दिस साउंड गुड? बताओ।
सर मॉर्निंग का ट्रेड आपका अभी भी चल रहा है? यस। कोई भी नहीं है यार, पूरा खाली। सर पार्टी इज नॉट इन बैंगलोर, पार्टी इज इन द स्काई। स्काई इज ए प्लेस, ओके, नॉट द स्काई। स्काई इज ए प्लेस नेम, स्काई में चल रहा है पार्टी। अगर स्काई करके नहीं पता, नहीं मिल रहा है आप लोगों को, यू कैन गूगल बिलियनियर्स कैफे। दैट इज द प्लेस। ऑल द न्यू मेंबर्स, वेलकम टू द स्ट्रीम। को भी डाउट है पूछिए। वीडियो अच्छी लग रही है, यू आर लर्निंग फ्रॉम द कंटेंट एंड द चैनल, डू हिट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नाम ही इतना फैंसी है। यस, इट्स इन दुबई, राइट। पूरा सर्कुलेटिंग सप्लाई हंट होने दो, तब तक आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सर व्हाई आर यू ऑलवेज सो कॉन्फिडेंट? गैस दूसरे लोगों को भी ये मैसेजेस दिख रहे हैं क्या? समर्थ, समर्थ हैज मैसेज। सर मींस क्या मैसेज किया? आर यू एक्सप्लेनिंग MC1 टुडे? समर्थ, यू डोंट ट्रेड इन गोल्ड, नो। MC1 अभी के लिए रहने दो, आपको नहीं चाहिए MC1। आई विल एक्सप्लेन, बट नॉट राइट नाउ। अविरल, MTSL फॉलो करके चलो। सुमित, नो। गुड इवनिंग सुमित। Not seeing the messages you're talking about. Okay. Took short on BTC at 82,600. उतना नीचे क्यों लेते हो सर? उतना नीचे क्यों लेते हो यहाँ पे?
Why? Follow the rule. 40 पे पैसे. सर मैं ट्रेड में नहीं हूँ. जस्ट स्ट्रीम वॉचिंग एंड एंजॉयिंग. सेमेस्टर खत्म होने का मजे ले रहे हो. हाँ, सॉरी, मिड टर्म खत्म होने का मजा ले रहे हो. हंस जी, प्लीज आंसर में दिस. लेट एंट्री करी थी. वही पूछ रहा हूँ भाई. गोल्ड 15 मिनट्स क्रिएटेड इंड्यूसमेंट. हाँ, वही मिड टर्म ही बोला मैंने अभी. Then broken after that retracement equal to inducement allocation, then followed by the demand allocation. How to look at that? Net issue हो गया था sir. Nothing you have to look at. Understand the first scenario always. What did first scenario indicate? Bearish S2. Okay. Bearish S2 create होने के बाद market took a rejection point. Then we got a inducement partners. Partner 1, partner 2, partner 3. Right? Break. With this break, rejection पे execution, continuity पे market अभी है. Right? At the point of action, miss out हो रहा है. तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? यहाँ पे आप major allocation of point लेके चल सकते हो. How do you look into the major point of allocations? Through how does the wick is creating at the what direction point? इस सिनेरियो में क्या नोटिस कर रहे हो आप? ब्रेक हुआ, क्या सस्टेन हुआ? यस. 1 आवर में आपको वॉल्यूम स्पाइक आते हुए दिखी थी. यस. कंफर्मेशन 1 आवर कैंडल क्लोजिंग बेरिश. यस. उसके बाद नेक्स्ट कैंडल मूवमेंट ऑफ अलोकेशन विक क्रिएट करने के लिए गया था 1 आवर में. यस. राइट. अभी कंटिन्यूटी में मार्केट नीचे है. आई एम जस्ट गिविंग यू एक्सप्लेनेशन ऑफ 1 आवर. What do you notice in 1 hour? What did the market has created at this point of action? नीलेश, क्या क्रिएट किया है मार्केट ने इस पॉइंट ऑफ एक्शन पे? राइट, व्हाट डू यू कॉल इट? विक क्रिएशन के साथ मार्केट क्लोजर, बॉडी क्लोजर ऑफ द 1 2 कंटिन्यूटी में मार्केट नीचे आया. सो व्हाट इज इट नोन एज? S2. S2 में कौन सा सिनेरियो बोलते हैं उसे नीलेश? व्हाट इज दैट सिनेरियो कॉल्ड इन S2? Is it a B1 or B2 of the bearish scenario? S22. That's nice. S22. Yeah. With the S22 rejection too, yeah, the market has followed down. So confirmation you have got, right? तो उसके साथ the direction of the target of mathematical concept is what? The mathematical concept numbers is at 2970.
following through the high point, low point, and the current retracement point, right? So in this scenario, what is the one thing that you guys could look for? You guys could look for a movement which has been built in a movemental direction. अगर सेफ्टी के लिए चाहिए, द नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन यू गाइस कैन डू इज, जहाँ पे हमारा मार्किंग है ना, ये आपका स्विंग हाई होगा. 2991 will be your swing low, and this 2995 will be your retracement point. मार्क कर लीजिए. उधर से जो नियरेस्ट पॉइंट ऑफ एक्शन होगा वहां तक मार्केट आप TP1 लेके चल सकते हो, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो. Entered in gold at the rejection, exited at 100 pips. Wow, Mavic, someone has got the confidence to execute the trades. That's nice, Mahesh. Good evening. Good evening, good evening, good evening, everybody. How high is he, man? और दो गुड इवनिंग ऐड करने बोलता तो वो भी ऐड कर देता शायद. Actually, I got confused as the breakout candle. Actually, I got confused as the breakout candle slow was not broken, and also the SL was coming out to be tall. Hmm. Okay, understood. I get your point. Good evening, Mahesh. Yes, holding till TP1 is the struggle. Definitely, step by step, you will definitely hold it, Mahesh. Go step by step, you will be able to do it and hold it till the point of action. मेरे को मेजरली ये हंटिंग चाहिए यार. जब तक वो हंटिंग नहीं मिलती है ना, लॉन्ग की तरफ बैठने के लिए फिर से मजा नहीं है, क्वांटिटी ऐड करने में भी मजा नहीं है. In this scenario, if you look for a swing high SL, you're giving to the market a nice 110 pips. So बीच से कभी भी मत पकड़ो. Only when there is an inducement you can hold for it. Okay. At this scenario, where all you can look for an execution. Right. On this candle closure, you could have looked for an execution. Right. ये continuity में जैसे ही break हुआ था, यहाँ पे execution देख सकते थे. What was the point of action over here? You had 4 points of action. Right. Second plan of action post this break of this candle. What was the plan of action? 3 points का SL था. राइट. अभी यहाँ पे बैठने के लिए देखोगे, देन द प्लान ऑफ एक्शन इज टोटली डिफरेंट.
This is someone's account, right? So always position sizing with a proper risk management should be allotted in the directions of the market, not in the opposite direction. That's the reason now. No central allocations, no running trades. Definitely some point of action you might have to take 5-6 पॉइंट का एसएल रेंज जहाँ पे विक रेंज बड़ा होता है कल के बीटीसी के सिनेरियो में जस्ट फॉर एन एग्जांपल ओवर हियर एट दिस पॉइंट ऑफ एक्शन राइट कहाँ पे गया यस सो दिस ट्रेड एंड दिस ट्रेड the SLs were a bit higher over here also the SL was a bit higher over here also SL was a bit higher why because as per the movement of allocation points what do we notice this is our London session. Our execution is over here, right? Here we have around 700 points SL range, right? We have to take that. But वो market नहीं आता है. For a safer side, we have to keep it. Same scenario. What do we notice over here? Execution is here, right? So from this point of action to this point of action is 689 points. Same with this 700 points, right? Because at this point of ranges, थोड़ा सा risk बड़ा होता है. But it will not hunt your SLs, but definitely it will move in your direction. To follow the RR, you have to make sure that you have to keep the level up, right? So उसके वजह से वो थोड़ा ये allocation points में गलती होती है लोगों की, right? Same scenario. Market definitely नीचे आया था. जिन जिन का point of execution यहाँ पे सब हुआ है well and good. But अगर risk to reward जो देख रहे हो ना कल के दिन का trade का 800 points का risk था हमारे पास. But if we leave in a moment of action जहां से execution हुआ है वहां से यहाँ तक it was a nice 3000 points move, keeping in mind it didn't move in the opposite direction, it came in the direction, but you have to follow the rule. There should be a SL placed in the system, hence in that point of action you have to keep the SL range. सर आप 10 पॉइंट का ड्रॉडाउन भी देखते हो कभी कभी वो एसएल कब लेते सर आप 10 पॉइंट्स का ड्रॉडाउन भी देखते हो कभी कभी वो एसएल कब लेते हो आप ट्रेड का पोजीशन के हिसाब से 25% to 30% is my plan of action because that trades doesn't close in the same day no out of 15-20 trades एक trade होता है यार वैसा so I'm okay with that. और तू ये कब की बात कर रहा है 6 महीने पहले की बात कर रहा है तू post that till today the biggest negative was when हाँ वही था जो आपने देखा था ना विरल that was the biggest
बट वो भी करेक्शन लेके मार्केट हैज कवर्ड अप एंड क्लोज दैट विथ 400 पॉइंट्स ग्रीन ना. सो ट्रेड दिखाता हूँ अभी तक याद है. दिस वाज द मोमेंट. ओके. एग्जीक्यूशन यहाँ पे हुआ था, ठीक है. विद द सेम सिनेरियो सेटअप वी हैड एग्जीक्यूटेड ओवर हियर. राइट, इतना कॉन्फिडेंस था ट्रेड में बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ एक्शन द मेजर प्लान ऑफ एक्शन क्या था. राइट, द मेजर प्लान ऑफ एक्शन ओवर हियर वाज द मार्केट वाज इन द पीओआई. राइट. सो यहाँ पे एक्सेल क्रिएट हुई थी. उस एक्सेल के साथ इतना कॉन्फिडेंटली ट्रेड में बैठा था ना. क्वांटिटी यहाँ पे ऐड हुई थी, यहाँ पे ऑर्डर हुई थी, यहाँ पे ऐड हुई थी. ओके. 4 पॉइंट्स का एसएल था. मार्केट ड्रॉ डाउन 1 2 3 4 यहाँ तक आया था. इस पॉइंट ऑफ एक्शन में द क्रेजिएस्ट पार्ट वाज क्रिएटेड. फ्रॉम दिस रेंज मार्केट टुक ए ब्रेक. फिर से उसी पॉइंट ऑफ एक्शन में आया. तो बोला भाई आज तो मैं हिट लेने वाला हूँ. इसके बाद जो ये कैंडल क्रिएट हुई ना, दिस गेव द कॉन्फिडेंस बैक. यस, दैट्स राइट. ओके. सर लास्ट एसएल आपका मैंने जुलाई में देखा था. वही प्लान ऑफ एक्शन दिखा रहा हूँ. गॉट इट. जुलाई में लास्ट एसएल. Actually, I was analyzing the entry in the retracement candle after the inducement break and the SL above the inducement range, and that was still 80 pips. So I thought that I should ask you. No, no, you can ask, right? That's a good thing that you did. सर याद है मुझे आपका स्क्रीनशॉट देखा था, उसको देखकर मैं भी एग्जिट नहीं किया. तूने फर्स्ट ऑफ ऑल वो गलती की थी. राइट, दैट वाज द मेजर पॉइंट ऑफ एक्शन. तेरा प्रॉब्लम ही हुआ है ना, लॉस में होल्ड करता है, विनिंग ट्रेड्स होल्ड नहीं करती है. एंड एग्जैक्टली तूने हेज किया था उस पॉइंट ऑफ एक्शन में. हेज करने में बोला ही नहीं था. राइट, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक. वो क्या ट्रेड क्या था तुम्हारा वो बताओ. Entered short in BTC at 83,380. Reason of execution, Mr. Mahesh. Please elaborate the execution point. मार्केट अभी तक क्लोजर नहीं लिया है, 10 मिनट है अभी भी. सर याद है मुझे आपका. सर यहाँ पर यूट्यूब में दिन का एक एसएल लेता है, बोलते हैं कभी कभी लॉस लेना चाहिए. भाई तूने एच किया था, मेरे को याद है. वो स्क्रीनशॉट मेरे पास अभी भी है. जो तूने भेजा था ना, वो स्क्रीनशॉट अभी भी है मेरे पास.
वो कुछ और था सर। महेश रीजन नहीं बोला अभी तक, व्हाई वाज द ट्रेड एग्जीक्यूटेड? एंड नीलेश एक चीज याद रखना, कोई कोई पॉइंट में आपको बड़ा बड़ा रिस्क रिवॉर्ड्स दिखते हैं, राइट? उस पॉइंट ऑफ एक्शन में देयर इज ओनली वन थिंग दैट यू हैव टू फॉलो इज अ प्रॉपर एग्जीक्यूशन पॉइंट। सर 15 minutes breakout retracement supply candle measured and entered. Also knew the Appu was not healthy. सर वो ट्रेड हेज वाला नहीं था, उसमें तो अकाउंट उड़ाया था मैंने। हेज करने का शौक उसके बाद ही चढ़ा था। ओके। बट तुम्हारा स्क्रीनशॉट्स क्रेजी थे यार। डू यू ट्रेड इन पीओए रेंज? इंट्राडे एक दो ट्रेड। नहीं रचित, जुलाई जुलाई होने के बाद नेक्स्ट अक्टूबर, अक्टूबर में लिया था, जुलाई के बाद। सर मैं बंदा ही क्रेजी हूँ। लोग 1:5 का आरआर से खेलते हैं, मैं 5:1 के आरआर पे। सर प्लीज टेल मी वेयर आई एम रॉन्ग। Level of executions to the numbers and the math is perfect, no doubt here. एक चीज याद रखना, 1 आवर की कैंडल में विक क्रिएट नहीं हुई है। ओके, सेकेंड प्राइस एक्शन पॉइंट, राइट? कैंडल क्लोजर कंप्लीशन नहीं मिला है। वी डू हैव अ सिनेरियो बिल्ट टुवर्ड्स द शॉर्ट, राइट? पोस्ट दैट मार्केट कंटिन्यूटी में क्लोज किया नहीं किया, 15 मिनट्स में आता है, right? With that plan of action, first candle closure, second candle movement, third candle ऊपर जाके at the current stage you have looked for an execution, right? अगर ये candle of execution में यहाँ पे कहीं पे बैठे होते, I could have understand the scenario, but here you could have waited for another one candle because 4 minutes में 1 hour का candle complete होती, okay? So you could have had even more confirmation on executing the trades. Don't repeat the same mistake again, Mahesh. अभी ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, 40 पिप्स का एसएल रेंज है, फॉलो दैट, बीच में एग्जिट मत करो।
300 is your execution point ना. एग्जैक्टली 300 पॉइंट्स ऊपर तुम्हारा विक रेंज है. अगर ये विक रेंज के अंदर ही मार्केट रहा, वेल एंड गुड, यू आर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट. Market will come down to the range of the inside liquidity point. Okay. मैं 5:1 का आरआर पे. कोई बात नहीं है. 5:1 का आरआर पे. कॉमेडी. वो बंदा कहाँ गया? मैसेज करके गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीबॉडी करके. एक गुड इवनिंग नहीं, तीन तीन गुड इवनिंग डाला था बंदे ने, वरुण ने. Guys, आज के दिन not interested. Markets are not looking good यार. Slow and steady movements है आज. कितना ट्रेड हुआ है? BTC 1, गोल्ड 1, उसके बाद कोई और ट्रेड नहीं. BTC ये वाला लिक्विडिटी लेने तक आई एम नॉट इंटरेस्टेड. सेम इन गोल्ड, ये वाला लिक्विडिटी लेने तक आई एम नॉट इंटरेस्टेड. अगर ये S2 सिनेरियो क्रिएट करके भी मार्केट ऊपर जाएगा ना, थोड़ी देर के लिए ऊपर जाके फिर से नीचे आ जाए, मजा क्या है उसमें? अविरल, और कितने साल है कॉलेज? यू करेंटली इन सेकेंड ईयर ना? 2027 जुलाई, 2 और साल. ठीक है. करेंटली फोर्थ सेम, मिड सेम वर डन. महेश, इस वीक का कितना ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुआ है? व्हाट इज योर विन रेट? मैसेज कर देना टेलीग्राम पे. सर, व्हाट इज योर एजुकेशन? आई हैव द सर्टिफिकेशन इन culinary, मेजरली इन molecular gastronomy. कितने बार पूछोगे यार सेम सवाल, मिस्टर अविरल जैन?
नहीं नहीं, basically you want to know that I am holding a degree or not. No, I am not holding a degree. Right, उसके उससे ज्यादा बढ़ के बड़ा है वो ऑक्यूपेशन पूछा वो. So molecular gastronomy is not taught everywhere. It's taught only in two countries. One it's taught in Switzerland, another one it's taught in US. So done through Swiss. 3 years course होती है with HACCP guidance, which is hazard analyze critical central point. We learn the cooking where you can convert the liquids into the solids, solids into the liquids, and the mastering of sommelier. Finally break the gold. Lovely. एक तो टारगेट हिट करो. समथिंग क्रेजी. सर क्या करते हैं उसमें? सो जो आप लोग बोलते हो ना, 5 स्टार होटल में छोटे छोटे दो चीज रख के 8,000 10,000 चार्ज करते हैं, उसमें एक्सपर्टाइज हो. आई विल शो यू व्हाट इज molecular gastronomy. नहीं, मैं समझा नहीं. सो दिस इज व्हाट आई डू. Better than this actually. I can make convert liquid into solid, solids into liquid. सर फिर कब खिला रहे हो? मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी का कोई भी रेस्टोरेंट उठा लो, राइट? उस रेस्टोरेंट का वेटिंग पीरियड देख लेना, काफी है. व्हाट इज द वेटिंग पीरियड? यू विल अंडरस्टैंड. सो बेसिकली यू आर अ शेफ. ऐसे बोल सकते हो शेफों का बाप. Chef I respect because they create cuisines. They follow the authenticity, right? We follow the heart. वर्ड बोलना एक और बार. कौन सा गैस्ट्रोनॉमी? एस्ट्रोनॉमी नहीं भाई, गैस्ट्रोनॉमी. मॉलिक्यूलर, MOLECULAR स्पेस GASTRONOMY. कूल है देखने में. यस, कूल तो है. क्रिप्टो इंडियन मार्केट्स में एंट्री कैसे ली आपने? ओके, स्टार्टिंग स्टोरी बताता हूँ, उसके बाद का स्टोरी बहुत बड़ा है. जब मैं होटल किचन में था ना,
One of my friends said me that give me 3,000 rupees, I will double it and give it to you. तो मैं उसको 3,000 दिया था. वो 1 घंटे में उसको 3,000 से लेके 13,000 तक बनाया था बंदे ने. राइट, 9,000 फर्स्ट राउंड में क्रिएट हुआ था, 9,000 होने के बाद 13,000. वो भी जस्ट इन अ स्पैम ऑफ 1 ईयर, सॉरी 1 डे. तो उसके साथ आई गॉट इनटू द मार्केट. उसके बाद जो लॉसेस खाया ना मैंने स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, सही लॉसेस खाया था मैं. क्योंकि दैट टाइम आई वाजंट फॉलोइंग एनीथिंग, आई वाज जस्ट फॉलोइंग ग्रीड. जितना मैं 7 फिगर कमाता हूँ मेरे को 2 दिन में चाहिए करके मैं ट्रेड करता था. उसके बाद जो इंटरेस्ट बिल्ड हुई ना मार्केट्स में, नेक्स्ट लेवल. Then I got one of the really good mentors who was a regular customer of our restaurant. She is from one of the very big institutions. She helped me out with understanding the maths and all. हाँ सर, बिगनिंग में वैसा होता है. भाई मेरा थोड़ा ज्यादा ही हुआ था एक्चुअली, आउट ऑफ द बॉक्स. मैं पूरा वो ये बोलते हैं ना, हाउ डू दे प्ले इन कैसीनोस, राइट, वैसे खेला था मैं 1 महीना. रोज. एक्चुअली आप बस भगवान की तरह मिल गए यूट्यूब पर. सर तभी सोचो, इतनी कितनी महंगी सैलरी थी आपकी जब आप शेफ थे. ये गैस्ट्रोनॉमी थिंग इज समथिंग न्यू आई लर्न टुडे. यस. वेरी फ्यू पीपल हैव डन इट, सो आई एम वन ऑफ द. बैक टेस्टिंग में कोई भी डाउट आ रहा है पूछिए, फॉरवर्ड टेस्टिंग में कुछ भी आ रहा है पूछिए. प्लीज डू लेट मी नो so that I can explain you. Okay. I agree with Rachit. Randomly bumped into your channel. Thank you guys. Thank you so much. Thank you Rachit. सर आप भी खतरनाक हो,
कोई कितना ही अनऑर्थोडॉक्स लाइफ। सर आप भी खतरनाक हो, कोई कितना ही अनऑर्थोडॉक्स लाइफ जी सकता है। मतलब अविरल। सर आप भगवान के तरह मिल गए। मेरा लॉसेस हुआ था तो तब लर्निंग पर ध्यान देना शुरू कर दिया। पैटर्न्स एंड एसएनआर। पैटर्न्स एंड एसएनआर, एसएनआर मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा। सब मैं सारा यूट्यूबर्स को फॉलो किया। उन उनके में सब एंड व्यूज नहीं दिख रहा था। सब मैं सारे यूट्यूबर्स को फॉलो किया। उनके सब एंड व्यूज नहीं देखता था। ओके। माय गोल्ड ऑर्डर रनिंग 2985 पर लिया है शॉर्ट। सर टुडे इज ब्लड मून। इफ टाइम मिले देख लेना। डेफिनेटली। मुझे बिगनिंग से पता था कि एक कैलकुलेशन से वर्क करता है, लेकिन वो मिल नहीं रहा था जो मुझे चाहिए, तो वो नॉलेज आपसे मिला। थैंक यू गाइस, थैंक यू। सर मेरा एक ही डाउट है। मैं 2 दिन से पूरा दिन चार्ट्स पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। बैक टेस्टिंग, कोई रिट्रेसमेंट वैल्यू एग्जैक्ट लेवल्स निकल के दे रही है, कोई कोई रिट्रेसमेंट लेवल्स गलत आ रही है। सो कोई वे है कि एग्जैक्टली कौन सा रिट्रेसमेंट हम ले, कोई एग्जैक्ट वे है कौन सा रिट्रेसमेंट हम ले सकते हैं? एग्जैक्ट रिट्रेसमेंट ले सकते हो, थोड़ा पेशेंस समर। ओके, यू विल फाइंड इट। मतलब लोग डिग्री करते हैं जॉब, मतलब लोग डिग्री करते हैं जॉब करते हैं रैट रेस थिंग। आप पहले तो ऐसे प्रोफेशन में जो हो जो लोग प्रोफेशन नहीं लक मानते हैं। उससे पहले आपकी जॉब एंड स्टडीज भी क्रेजी, मतलब ये तो साइंस। बट व्हाट a beautiful application of science. Yes, that's how I understand the numbers better, no? हंस जी, 50 पिप्स रनिंग में है आपका ट्रेड, राइट? फॉलो द MTSL रूल, बी इन द एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट टारगेट क्या है? सर इतना बड़ा स्क्रीन में इतना बड़ा नंबर दिख रहा है सर। यही हमारा नेक्स्ट टारगेट है सर। 2970, जो कि हमारा ग्रीन लाइन। प्लीज फॉलो दैट। And thank you everyone for removing out times, doing the back testing, doing the forward testing, and learning. Keep learning and keep growing. Only one thing I could suggest you, right? Trade fearlessly, following the risk managements. Emotional less trades execute karna, follow the math of जीतने से खुशी मनाना, हारने से दुखी मनाना is not a quality of the traders. Be in the direction of math, follow the supply and demand, sit patientfully till the executions. Okay?
समर्थ, मेरा भी वही इशू था पहले, कोई भी चार्ट उठा के देख लो, बाद में सर उस दिन का एक्सप्लेनेशन किया वही देखो, बेस्ट रहेगा, एक्यूरेसी एक्यूरेसी बढ़िया बढ़ेगी. ओके ओके guys, doctor has said another 4 days I will be babbling like this only, tongue twist hoti rahegi, because speaking from morning 3 o 3:35, 3:40, 3:45, 3:45 to night 11 o'clock. So हल्का सा pipes बड़ा हो गया है. So 4 days more. मैं सोचा doctor will give me something magical दवाई to solve it, but even doctor didn't had it. So he said me wait patientfully for 4 days. So I said okay. All the new members, welcome to the stream. जो भी डाउट है पूछिए. वीडियो अच्छी लग रही है, स्ट्रीमिंग में कुछ सीख रहे हो, do hit a like, share and subscribe. Yes sir, get well sir. Yeah, I'm all well, just the pipes has got bigger. So जैसे ही वो डॉक्टर ने बोला ना, be patient for 4 days, I was laughing inside. There is no magic in this world. That was the doctor's word. And he is the family doctor as well. Hey Patel, happy Holi. How are you? How is your back testing going on? How is your forward testing going on? Get much better soon. No, guys, I am good. Just the tongue twist हो रहा है ना. Words are getting slipped out. Solana के जगह में Solana, right? Scenarios के बदले में कुछ और निकल रहा था कल परसों. So tongue twist हो रही थी. I have started learning. Should I start with the oldest videos first? No, no, no. Sumit, right? First video, look into what chart do you trade in. You let me know that. I will let you know the process. Saloni. What pipe surgery? So tongue is connected to two pipes, okay? One where the voice blender gets popped in. The voice blender का जो pipe है ना, वो थोड़ा बड़ा हो गया है. So the tongue is not twisting properly. So the words are jumbling. So he has given me a juice to drink. इतना कड़वा है ना वो juice. Okay, Sumit, let me know which chart do you trade in. According to that, we will let you know what is the process to look into the current way of looking into the markets. Patience and magic वाली बात तो सुनी सुनी लग रही है. Author of Unbreakable Mindset ने कहा था एक बार. And वो author of Unbreakable मैं ही हूँ जनाब. Okay. I am doing backtest in Indian markets as I am not planning to enter in gold or bid for this month. No, that's totally fine, right? Patel, backtesting कर रहे हो, तो two things keep in mind, right? Start with equities, 6 months of backtesting, then move to futures, 6 months of backtesting. With that, come to indices, 6 months of backtesting. राइट. जैसे ही 6 months का बैक टेस्टिंग होती है, देन कम टू फॉरवर्ड टेस्टिंग. यूज ट्रेडिंग व्यू और यूज गो चार्ट फॉर फ्री replay modes, and 6 months का फॉरवर्ड टेस्टिंग कर लेना.
राइट? पोस्ट कंप्लीशन ऑफ दैट डाउट्स आता है तो लिख लेना, लाइव्स में पूछ लेना. अगर डाउट्स नहीं आती है, then come into the live markets and look into the same circumstances and allocate the same learnings what you did in back testing and forward testings. Sir, suggest videos for BTC gold to start with. Okay, अगर gold start करना है, look for MC1, right? In home tab, there is a section called as mathematical concept करके, उसमें से edge 1 mathematical concept 2 ये दो वीडियो देखना. उसके बाद इंड्यूसमेंट का एक वीडियो है लिक्विडिटी वॉल्यूम्स के साथ, वो वीडियो देखना. Right, post that look into the video of supply and demand. Post looking into the video of supply demand, इस संडे को एक वीडियो आ रही है, right, which plays a very important major role in all the markets. In detailed explanation about the markets, right, how to look into the current spectrum of the analysis where the exact movements is looked at, right? Through that perspective, the next allocations will be back testing and forward testing, what you have learned in the video, right? So back testing for gold will be 1.5 years back, forward testing will be of 1 year. Forward testings with the relay mode. BTC, 2 years of back testing, 1.5 years of forward testing, then live testing, then execution of trades. Okay, not prior to that. Okay, Sumit. Sir, I have a subject, evolutionary psychology. उसमें it was written, we humans have evolved larger NSC, हाँ, right, just so that we can speak, which always have a threat of choking food that time. वो जो एलेक्सी है ना, उस एलेक्सी में ही एक पाइप आती है, वो पाइप मोटा हो गया है. Got it, thanks. No worries, Sumit. Okay, and keep a book for yourself, Sumit. When you're learning, note down all the doubts. Live में पूछो, right? Execute it. अगर लाइव में रहते हो तो लाइव में ही बैक टेस्ट करो. With that plan of action, you will get better day by day. SL in BTC, आपका SL तो कब का ही गया सर, अभी क्या बोल रहे हो? Your SL went long back. Should have waited for a red candle confirmation at 15. वही तो बोल रहा था. 5 मिनट और वेट करना था ना, 1 आवर का कैंडल वेटिंग किया ही नहीं आपने. सर बीटीसी का ट्रेड नहीं सर, गोल्ड में चल रहा है. Not focused in two charts today. I don't have a back support. सब सब सपोर्ट आज पार्टी में है. MTSL at 30 pips. Yes, MTSL at 30 pips. मतलब मैं बात बता रहा, उसमें ये लिखा था, ह्यूमंस ने बोलने के लिए हेल्थ का रिस्क लिया है. वो कह रहा था साइकोलॉजिस्ट इंक्लूडेड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. ओके सर.
यू मिस्ड बीटीसी हाउ? उस पार्टी में एक और इंसान है ना, उससे पूछो, वही करके। वही डिड ही मिस करके पूछो उससे, बताएगा। सॉरी, बताएगी। अगर वो होती तो गोल्ड गोल्ड में वो देखती होती, मैं बीटीसी में होता। रचित, ही इज ड्रंक, प्लीज। यो ब्रो, हु आर। हाँ, देता हूँ। वेयर हैव यू सैट इन गोल्ड? फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन 2993 में एग्जीक्यूशन है। फिर से क्वांटिटी एडेड था 2987 पे। फिर से क्वांटिटी एडेड था 3002 पे। फिर से क्वांटिटी एडेड था 29999.700 पे। एंड लास्ट क्वांटिटी वाज एडेड एट 2993 अगेन। सर, बीटीसी का लॉन्ग का एक्सप्लेनेशन देना। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन फॉर लॉन्ग एज ऑफ नाउ, राइट? 1 आवर के हिसाब से जितना प्रीवियस सप्लाई है वो अलोकेशन करके चलो, मैथमेटिकल नंबर फॉलो करके चल रही है। द मार्केट isn't doing anything as of now. फ्राइडे के दिन है, नो लिक्विडिटी हंट, नथिंग। सो व्हाट इज मार्केट डूइंग? जितना हमारा प्रीवियस मूवमेंट है ना इस पॉइंट ऑफ एक्शन में, वो फॉलो करके जा रहा है। सो दिस इज व्हाट मार्केट इज करेंटली फॉलोइंग। अगर ये कंटिन्यूटी में जाता है तो मार्केट विल कंटिन्यू द मूवमेंट टू द नेक्स्ट लेन ऑफ एक्शन 50%। यहाँ तक आएगी। अगर ब्रेक होके सस्टेन होता है तो मतलब 2000 लॉट्स रनिंग। किसकी बात कर रहे हो, अविरल? आपके गोल्ड का, ओके, गॉट इट। ऑल द न्यू मेंबर्स, वेलकम टू द स्ट्रीम। जो भी डाउट है पूछ लीजिएगा। आई सेड श्रेया टू हैंडल। भाई वो भी तेरे साथ ही है ना वहां पे।
She is the only one who hasn't started to drink it, sir. भाई हो गया यूट्यूब से बाहर मंडे को मिलता है Okay, Aviral, you got the explanation? Right? There is no liquidity hunt, nothing. The market is giving the movement. Not even a single wick created. Wick नहीं है, wick नहीं है, wick नहीं है. Right? ये पूरा liquidity zone है. याद रख लेना. There is no wicks. This happens every second Saturday. मैं तेरे को क्या बोला लाइव पे मत रह जा इरिटेट मत कर तू हाँ ये जो बोल रहा है ना दिस हैपेंस एवरी सेकेंड सैटरडे दैट ही इज टॉकिंग अबाउट लिक्विडिटी हंटिंग ओके लिक्विडिटी हंट नहीं होती है मोस्ट ऑफ द सेकेंड सैटरडेज अगर मॉर्निंग के सेशन में भी नोटिस करोगे राइट you will go through the circumstances that market won't hunt as we required but hunt करती है right so उसके साथ movement allocation थोड़ा slow रहता है हंस क्यों रहे हो यस सर किसके लिए बोल रहा है विरल guys stream will be there for next 15 minutes this guys has spammed me in WhatsApp like anything एसएल हंटिंग के लिए हाँ sir Miss Elizabeth was asking
वरुण, श्रेया को बोलना, एलिजाबेथ को बोले मेरे को कॉल करने के लिए, राइट? द रिजर्वेशन इज फॉर 7 tables, okay? There are many more people who is going to come for that event. या श्रेया को बोलो मेरे को कॉल करने के लिए. There are more 170 people who are walking in. एंड बीटीसी करवाने बोलना उसे, श्रेया को बोल के. एंड दिस इज योर लास्ट मैसेज, ओके? उसके बाद नो मोर मैसेजेस. ओके सर, व्हाट इज बीटीसी? बिटकॉइन नहीं भाई, बिल्ड टू कंपनी. यार, इसके बाद नो मोर मैसेजेस. ओके, बिल्ड टू कंपनी कराने बोल देना. श्रेया को बोलो मेरे को कॉल करने. हेलो श्रेया, फर्स्ट चीज वरुण का फोन लेके तुम्हारा पर्स में रखो. सेकंड चीज, एलिजाबेथ से बात करो, ओके? देयर आर 7 more tables which have just booked. Okay, all VIP launch should be under us only, and BTC करा लें. हाँ, ओके, थैंक यू. एंड उसका फोन ले, उसको मैसेज करने मत दे यूट्यूब में. थैंक यू सो मच अविरल. No, Samar, there was one of the major events. Martin Giggs and Shivels was playing in Sky, Billionaires Cafe, Dubai. So, holy event for LTD and staff members were thrown over there. So, everyone are enjoying thoda ज़्यादा पी लिया है. And he's not a drunkard. So, पहली बार पिया है उसके वजह से. He has drank liquor for the first time. He is currently 25 years. Sir, before you got MC1 calculation for gold, you used 2940.999 as the low for me. It was 2939.090. So, was your number based on an estimate? No, the number was based on the IG chart, not as per the LTD chart. Sorry, not as per the trading view chart. Varun by right now chill mode. नहीं, अभी उसका मैसेज नहीं आएगा. The phone has been confiscated.
Okay. Trading view, because there are a lot of multiple ranges which gets created, right? So multiple ranges के वजह से market tend to always give one average number, right? जो एक्सनेस में भी ट्रेड करते हैं, अगर नोटिस करोगे, जो हाई पॉइंट है वो अलग रहेगा, ट्रेडिंग व्यू का हाई पॉइंट अलग रहेगा, right? This high point of Exness will be different and of trading will be different, right? The people who are using prop firm, they can also notice this high point of yours will be different and trading views high point will be different. Okay. Yes, sir. Right. So basically, Mahesh, the numbers what I take is from IG because that is as accurate as possible. Right? You can say IG charts are 99.999% accurate. वो 0.001% जो है, right? So that's the only small glitch they have. Yes, sir. prop firm prop फंड्स के बारे में बताओ, क्या करते हैं? कुछ नहीं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल समझो, तुम्हारे पास फंड्स कम हैं, राइट? तो यू बाय आउट अ मेजर अकाउंट ऑफ 100K which is 1 crore paying by 30,000, right? In this, what you will be having? You will be having two ranges. दो डेमो क्लियर करना होता है, राइट? एक पर्टिकुलर रेंज में, एक में 4,000 होता है, सम में 5,000, सम में 10,000, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ अकाउंट यू हैव टेकन, राइट? Post completion of this, okay, this 4,000, 5,000, 10,000 is in dollars, huh? Because this is a 1 crore account. अगर तू डेमो अकाउंट क्लियर करता है, नेक्स्ट आके तेरे को रियल अकाउंट देंगे ट्रेड करने के लिए, राइट? ऑन ए डे टू डे बेसिस यू विल बी हैविंग ड्रॉडाउन्स, 1,000, 2,000, 500 का, राइट? 3,000 का ड्रॉडाउन, अगर वो ड्रॉडाउन के नीचे तो क्लोज करता है, योर अकाउंट विल बी फ्रीज्ड. अगर उसके ऊपर ही रहता है, you can withdraw on an average payout, right? वीकली payouts होता है, मंथली payouts होता है, उसके हिसाब से तू payout निकाल सकता है. And how does prop firm profitable? Out of 1,000 traders, there will be only 4 or 5 traders who will get the access to the real account. Rest all others will blow their account in demo only. So that's how they are profitable, right? And usme it's like you can't take the risk hit as well, right? अगर 2,500 के नीचे एक एक सेंट भी आता है ना, तुम्हारा अकाउंट फ्रीज हो जाता है, right? It's all triggered in that way, so you won't be able to suffice. Definitely, अगर तूने वो बात अचीव कर ली, डेमो अकाउंट से बाहर निकल गया, रियल अकाउंट में आ गया, then it's a really good thing because you will be having 100K account. In that 100K account तुम्हारा मैक्स ड्रॉ डाउन है 2,500 का, वीकली बेसिस में तुम $5,000 का ट्रेड एग्जीक्यूशन लेके चल रहे हो ना, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट्स रियली गुड. द ओनली थिंग इज यहाँ पे प्रॉप फॉर्म अकाउंट्स ले रहे हो तो रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पोजिशन साइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? 10 पिप, 20 पिप्स, 30 पिप्स के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे आप प्रॉप फॉर्म्स में,
ही वोंट एबल टू सफाइस। स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्रॉप फॉर्म्स यूज करना, डेफिनेटली इट्स ए रियली गुड ऑप्शन, बट नॉट सजेस्टेड बाय मी। जो कर रहे हो उनके हिसाब से देख सकते हो, बहुत रिस्की लगता है। नहीं, कभी किया नहीं हो तो पता नहीं है, टू बी फ्रैंक। सो आपका जो भी है असली पैसा। यस। मैं टेलीग्राम खोला क्यों, फर्स्ट ऑफ ऑल? MTSL हेड। ओके। हंस जी, आप रनिंग में ट्रेड एग्जीक्यूट करना बंद करो। 100 पिप्स का ट्रेड आप 30 पिप्स में क्लोज किए। ओके, ये फोमो ट्रेडिंग आपको बंद करना पड़ेगा प्लीज। क्यों रचित, आपने यूज किया था क्या? नहीं, वी डू हैव पीपल हु यूज, नो, अनुराग यूजेस prop firm, इमरान यूजेस prop firm, हंस यूजेस prop firm, वो सब फंडेड नेक्स्ट यूज करता है, इमरान एंड हंस। कश्मीर में तू कन्याकुमारी। सर व्हाट अबाउट फंडिंग पिप्स? फंडिंग पिप्स उतना नहीं पता है, जो यूज करते हैं उसके हिसाब से पता है। फ्रीज हो जाता है, वही ड्रॉ डाउन होने के बाद वो फ्रीज हो जाता है अकाउंट। करेक्ट रचित, सही बोल रहे थे आप। यू मीन हमने 2993 पर लेना चाहिए था? आपको 2993 पे नहीं, आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना चाहिए। 2995 पे आपका एग्जीक्यूशन कहाँ पे हुआ? आपका एग्जीक्यूशन एट द लोएस्ट पॉइंट हुआ है। इतना स्लो एंड स्टडीली मार्केट जा रही है, राइट? सो रिस्क रिस्क मैनेजमेंट आपको फॉलो करना है जी। हाँ, शॉर्ट का ही ट्रेड का बोल रहा था।
बीटीसी का मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, आपने बोला क्योंकि इंटरनेट के वजह से वो लैग में पूरा नीचे हिट हुआ, दैट इज टोटली अंडरस्टैंडेबल। बट गोल्ड का आपका एग्जीक्यूशन पॉइंट होना चाहिए था 2998 पे। 2993 is also a good point of action, right? And 29999 as per the scenario 2. These are the three scenario points where you could have executed the trades. Okay, going forward both niche mat beto, and by looking into this price action you shouldn't actually trade at all because you use a prop firm. Hence I am saying you, I'm just giving you a suggestion. In this kind of markets, please don't execute the trades. Okay. Okay, guys, don't lose the money in the zones of this kind of markets, right? Where the liquidity hunting is taking so much of time. Market बहुत slow चल रही है आज के दिन में. There is no as much as volume that we required to look for an execution of trades. Protect your capital. Don't trade in FOMO. Don't execute the trades in the wrong directions. Follow the mathematical concepts. Be in the directions of the math. Follow one rule, trade risk. Follow one rule, trade fearlessly, execute the trades in the directions of the math. Follow the risk management. With risk management, emotional less trading is very much. जीतने से खुशी मनाना, हारने से दुखी हो जाना is not the quality of the trader. Carry the poker face when you are in the trades. Happy weekend. Enjoy the evening. Happy Holi. मिलते हैं Monday. तब तक के लिए take care. Bye bye. Nitesh signing off.